So coordination is not a function of management. It is essential. It is the essence of management. How we can say it is an essence of management? Because it involves in every function of management. ठीक है, ये जो भी हमने functions पढ़े हैं, planning, organizing, directing, controlling, staffing, उन सब में coordination के बिना काम ही नहीं चल सकता है. Because management is a group activity. अगर एक ग्रुप एक्टिविटी को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, एक टारगेट दे दिया जाए, तो पूरा तभी होगा जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा और हर स्टेप पे होगा. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग. It involves in planning. It involves in. It is involved in organizing. It involves in staffing. It involves in controlling. And it involves in directing. So that is why it is said to be, ये common question है आपका boards में. Why coordination is said to be the essence of management? Because it involves in each and every function of management. No function can be completed without coordination. Targets cannot be achieved without coordination. Are you getting my point? So any person who performs managerial functions, planning, organizing, staffing, directing, and controlling is considered as a manager. The focus of one second. Apart from these 5 functions, there is one more important function which every manager has to perform. This is called coordination. It is not only a function, but it is the essence of management. The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. देखिए, different departments होते हैं, plan like production department, finance department, marketing department, sales department, human resource department. ठीक है, इन सब के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सेल कहता है कि हमको और मटेरियल चाहिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है. ठीक है, हम प्रोडक्शन ज्यादा करते जाएं, सेल कम है हमारी, तो इन सब में एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा, तब तक कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं हो सकते. तो कोऑर्डिनेशन इज द बेस और primary function of every manager, because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities. Coordination is the essence of management. Coordination brings unity of action, integrates different activities of organization. Coordination is considered as the essence of management because of the following reasons. Integrate. It integrates all the functions. मतलब एक धागे में पिरोना जिसको कहेंगे. ठीक है. It integrates all the functions of management. It coordinates different activities of organization. Coordination is needed to perform all the functions of management. The process of coordination begins planning stage when top management plans for whole organization. Based on plans, then organizational structure is developed, the staff is recruited, selected and trained to ensure right execution of plan, direction are given, controlling ensures no discrepancy between plan and actual
परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन नो फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एंड द टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड। नाउ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे जरूरत है। मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था। टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, मिडिल लेवल पे और सुपरवाइजरी लेवल पे, तीनों लेवल्स पे कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी टारगेट्स बिना कोऑर्डिनेशन के अचीव नहीं किया जा सकता as far as the group activities are concerned. And you know, management is a group activity. Okay, so अगर आपको एक टारगेट दिया जाए आपके क्लास को और एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो जब तक आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, आप लोग कहेंगे ये नहीं ये होना चाहिए, उससे क्या होगा, टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे या वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो कि डिजायरेबल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी कंपनी which fails to coordinate its activities cannot survive and run successfully for a long period of time. It is though the process of coordination that a manager ensures orderly arrangements of individual and group efforts in realization of common objectives. Coordination involves synchronization of different actions, various units or departments. Coordination makes sure that planned objectives are achieved with minimum conflicts. तो कोऑर्डिनेशन ये श्योर करता है, इंश्योर करता है कि जो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो अचीव हो जाएं विदाउट और विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। Nature of coordination, or we can say features, characteristics of coordination. First, features of coordination. First is it integrates group efforts. It integrates group efforts. ठीक है, ये जो है ये पूरे ग्रुप का यानी पूरी कंपनी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाता है। अगर सब लोग कोऑर्डिनेशन के विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स काम करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तो इट विल इंटीग्रेट का मतलब सबको साथ में लेके आना, ग्रुप एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाना। दैट इज ओनली पॉसिबल विद कोऑर्डिनेशन। Second is ensure unity of efforts. It ensures unity of efforts. ठीक है, it ensures unity of efforts यानी जो efforts, अब मान लीजिए चार लोग आप साथ में एक टारगेट्स को अचीव करना है, अगर चारों डायरेक्शन में जाएंगे तो हाउ द टारगेट्स विल बी अचीव। तो जो एफर्ट्स हैं उनको यूनिटी प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन। देन थर्ड इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, जब तक कंपनी रहेगी, फर्म रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। देन coordination is a pervasive function. It is a pervasive
function. What do you mean by pervasive function? What do you understand by pervasive function? So function which is everywhere to be It is performed. everywhere. It is in every organization. Every single unit has to perform coordination. So then coordination is the responsibility of all managers. It is the responsibility of all managers. It is the responsibility of all managers. ठीक है? ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में और ऑल डिपार्टमेंट और बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चले. Next, coordination is a deliberate function. It is a deliberate function. Deliberate function मतलब कि ये अपने आप से आता है, ये कोई जनरेट नहीं कर सकता आपके अंदर. ठीक है, ये अपने आप से आता है. दिस इज डेलिबरेट फंक्शन. इट अपने आप से आपको इनिशिएटिव लेना होता है, मैनेजर्स को इनिशिएटिव लेना होता है, सो दैट द कोऑर्डिनेशन should be maintained in the organization. There should not be any conflict in the department, as well as interdepartmental conflict should not be there. Only the objectives of the company, all the departments should focus on the objectives of the company and do as per the planning. So it is not generated, it is deliberate function. Importance of coordination. Importance of coordination. First is growth insight. Growth insights. ठीक है, तो जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत होगी. ठीक है, इट इज जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ग्रो करेगा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते जाएंगे या डिफरेंट आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती जाएगी. तो इट इज the need of coordination increases with the increase in the size of the organization, because in large organization there are more number of persons working. Each individual has his own needs and objectives. तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज और सबकी अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग बॉन्ड्स हैं, और सबको हमें कोऑर्डिनेट करके एक डायरेक्शन में लेके जाना है. दैट इज ग्रोथ इन साइज. देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन. सेकंड इज फंक्शनल differentiation. Second is functional differentiation. The functions of an organization are divided into different departments. As I have told you, functions of the organization like production department, sales department, marketing department, production, human resource department, finance department. तो जितने भी functions हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सुप्रीम बताने की कोशिश करता है, हर डिपार्टमेंट.
वो कोशिश करते हैं हर डिपार्टमेंट की अपने आप को की इम्पोर्टेंस शो करें, जबकि ऑन एंड होल हर डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है और सबको एक टारगेट अचीव करने के लिए काम करना है. So because of functional differentiation, there is conflicts between the two departments. ठीक है, interdepartmental conflicts are there. उसको सिर्फ coordination खत्म कर सकता है जो interdepartmental conflicts हैं, and it is very harmful to the organization. So the functions of an organization are divided into different departments, sections, and divisions, and each department works in isolation by giving more importance to its objectives. But in actual practice, these departments are interrelated, interlinked, and interdependent. So there is more need to relate and bring together the activities of different sections as they are part of the organization only. ठीक है, हर डिपार्टमेंट के अलग फंक्शंस हैं, बट एक्चुअली में वो सारे डिपार्टमेंट मिला के ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है. अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या हर डिपार्टमेंट अपने आप को सुप्रीम बताने की कोशिश करेगा, तो इट विल डेविएट फ्रॉम द टारगेट. ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स and all should work in a coordination form to achieve a single objective. That is the organizational objective. Next is specialization. Third is specialization. Specialization, ठीक है, in large and modern organization, there is a high degree of specialization, and specialists or experts feel that they are only qualified people and they always take right decisions and right direction. देखिए, आज के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें स्पेशलिस्ट को ही जगह मिलती है या रिक्रूट किया जाता है. लाइक आपने एमबीए फाइनेंस किया आगे चल के और आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने से विप्रो ने या माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल ने आपको रिक्रूट किया एज अ मैनेजर. आप सोचेंगे हम ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं यहाँ पर और जो हम डिसीजंस लेंगे वही सही होगा और हम ही सही राइट पाथ बताएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, जो दूसरे लोग के जो सजेशंस होंगे, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होंगे, उनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे. तो स्पेशलाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो सोचते हैं कि हमारे डिसीजन ही सही हैं और हम ही हमारे डायरेक्शन ही सही हैं, एंड दिस विल इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन विल लैक. सो स्पेशलाइजेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंपॉर्टेंस कहाँ है कोऑर्डिनेशन की? जब साइज बड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन का, जब बहुत सारे फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जब बहुत सारे स्पेशलाइज्ड पर्संस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत और ज्यादा हो जाती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं और कोऑर्डिनेशन लैक होता है. Thank you so much. This was it for today. Once again, please go through the chapter thoroughly. Thank you so much. God bless you.